India, proudly known as Bharat, the largest democracy in the world, is also known for the unmatched contribution of Mahatma Gandhi, Mother Teresa, Gautam Buddha, and Dr. Babasaheb Ambedkar. Bharat not only gave the world Gandhi, who showed us the path of non-violence, but also Samrat Ashoka, who won all the wars in the battlefield. Gautam Buddha, who saved the world from destruction, was also India's gift. And so was Dr. Babasaheb Ambedkar, who gave justice to Dalits, scheduled castes, and who also wrote the Constitution of India. Dr. Babasaheb Ambedkar was an Indian jurist, political leader, philosopher, and one of the founding fathers of independent India. Overcoming numerous social and financial obstacles, Dr. Babasaheb Ambedkar became the principal architect of India's democratic constitution and a builder of modern India. Here are some valuable thoughts of Bharat Ratna Dr. Babasaheb Ambedkar. Cultivation of mind should be the ultimate aim of human existence. I like the religion that teaches liberty, equality, and fraternity. Men are mortal, so are ideas. An idea needs propagation as much as a plant needs watering, otherwise both will wither and die. I measure the progress of a community by the degree of progress which women have achieved. Kalpana Saroj is the best example of Dr. Babasaheb Ambedkar's point of view towards the society through women's empowerment. Kalpana means idea. And ideas shape the course of history. Despite being born in the rural region of Vidarbha in Maharashtra, today her name is counted as one in the 7 most successful women in the world. That's exactly what Padma Shri Kalpana Saroj is. The journey of Kalpana Saroj is not a cakewalk. She had to go through a lot of agony and pain since her childhood. In her frustration, Kalpana made an attempt to suicide. She wanted her life to end in ashes. This is the time where Kalpana Saroj followed the ideology of Dr. Babasaheb Ambedkar. She accepted Dr. Ambedkar's constitutional teachings as her religion, and she credits all her life's achievements to the values she learned from Babasaheb. Today, thousands of women all over the country are empowered by her. Our Prime Minister Shri Narendra Modi also appreciated her achievements and congratulated her.
बाबा साहब आम्बेडकर के उन सपनों को हमें पूरा करना है। आप हमारे मिलिंद जी ने वर्णन किया कि लंदन में बाबा साहब आम्बेडकर का जो मकान था वहाँ स्मारक बनाया, लेकिन उसकी क्रेडिट पहली किसी जाती है तो कल्पना को जाती है, क्योंकि सबसे पहले आवाज उठाई थी कल्पना ने। उसने आवाज उठाई कि भाई जागो, ये मकान बिक रहा है। और हम जागते थे, हमारे कान पे आवाज आई और आज वो मकान एक प्रेरणा का केंद्र बन जाएगा। देश की युवा पीढ़ी जब भी लंदन जाएगी तो देखेगी कि हाँ, इस जगह पे बाबा साहब आम्बेडकर ने शिक्षा ग्रहण की और हिंदुस्तान को एक नया जीवन देने का प्रयास किया। आप सब ने मुझे खड़े होकर के सम्मानित किया, लेकिन मैं मानता हूं कि इस सम्मान का अगर कोई एक व्यक्ति अधिकारी है तो वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर। कभी कभार जब हम खबरें सुनते हैं कि जीवन में अघटित हो जाए, निराशा आ जाए, तो इंसान सोचता है अब जीना बेकार है, अब तो क्या करना, कोई मेरे साथ नहीं है, आत्महत्या के रास्ते पर चल पड़ता है। अच्छे घर के नौजवान भी कभी कभी उस रास्ते पर चल पड़ते हैं। मैं आज सभागृह में जिनके भी मन में कभी आत्महत्या का विचार आता है, उनसे मैं आग्रह करता हूं कि आत्महत्या करने के विचार आने से पहले एक बार कल्पना सरोज को फोन कर दीजिए, एक बार कल्पना को फोन कर दीजिए। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कल्पना ने अपनी जिंदगी को कहां से कहां ले गई है, कितने संकटों से ले गई। जीवन और मृत्यु में से तय करने का था, उसने जीवन को जीना तय कर लिया और आज हमारे सामने बैठी। यानी निराशा के माहौल में भी जीने की आस जगाने की ताकत अगर कोई दे सकता है तो ये पूरा समाज दे सकता है। Through that ideology, the phoenix named Kalpana Saroj rises from the ashes. She kept faith in Dr. Baba Saheb Ambedkar's ideology and walked through the fire. From 2 rupees per day, Kalpana built an empire worth crores. An outcast student then, Kalpana is now looked upon as an icon. Dr. Baba Saheb Ambedkar, the backbone of Indian Constitution, had written a letter to UNO in 1945, requesting to meet and discuss issues regarding women empowerment. Things didn't work out at that time, but today things are different. On this occasion, when the world celebrates 125th birth anniversary of Dr. Baba Saheb Ambedkar at New York, Kalpana Saroj Foundation proposes and requests the UNO to declare Dr. Baba Saheb Ambedkar as the man of the century.